Good morning, students. Let's begin our today's class. We have ended with exercise 3.1 of polynomial chapter, where we have did the first bit, first and second problem. First bits, first and second problem. Third bit we are going to do it now. I'll just read out the question. Divide the polynomial p of x. Divide the polynomial p of x by the polynomial g of x. Divide the polynomial p of x by polynomial g of x. Okay. P of x. What is p of x? That is x to the power of 4. X to the power of 4. Here cube term is missing. We are going to put 0x to the power of 3. Square term is missing. We are going to put 0x square minus 5x plus 6. What we did? Here the cube and square terms are missing. So we have put a dummy, that is 0x cube and 0x square. We are going to divide this with 2 minus x square. We are going to arrange this. We are going to arrange this with the highest degree of polynomial, that is minus x square and plus 2. Minus x square plus 2. What I said, divide the page, the lower, not divide, just draw a line at the bottom of the page and do the calculation work. That is how we are going to do. Yesterday I have explained you how we are going to do. We are going to divide the first term of p of x with the first term of q of x to get the first term of coefficient. That is x to the power of 4 by x to the power of 4 by minus x square. यहाँ से x square and x power 4 cancel. Okay, we got the term minus x square. We got the first term of coefficient as minus x square. अब ये minus x square को we are going to multiply with g of x, that is minus x square plus 2. Minus into minus becomes plus x square. Minus x square into 2 is 2x. X square into x square is x power 4 and minus into minus become plus minus 2x square. ये आ गया. अब हम जो टर्म है उसके नीचे लिखेंगे x power 4, हम x power 4 के नीचे लिखेंगे and x square we are going to write under x square term minus x square. चलिए change the sign, minus plus, this will get cancelled. 0 plus 2x is nothing but 2x square. नीचे ले लो ये minus 5x and plus 6. Got it? अब फिर से क्या करेंगे हम? मैं आपको फिर से वही बोली, first term of this divided by the first term of g of x, that is 2x square by minus x square. 2x square by minus x square. x square कैंसिल, क्या बचा? माइनस 2. हमको सेकेंड टर्म ऑफ कोएफिशिएंट का सेकेंड टर्म आ गया हमको, दैट इज माइनस 2. सेकेंड टर्म ऑफ कोएफिशिएंट वी गॉट इट माइनस 2. नाउ वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस माइनस 2 विथ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2. माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस. एक्स स्क्वायर इंटू 2 इज नथिंग बट 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 2 2s are 4. चलिए अब डाल दीजिए माँ. 2x स्क्वायर माइनस 4. चेंज द साइन, माइनस प्लस, चेंज द साइन माइनस प्लस, दिस विल गेट कैंसिल. क्या बचा माँ? माइनस 5x माइनस इंटू माइनस प्लस 6 प्लस 4 is 10. Therefore remainder is minus 5x plus 10 and the quotient is minus x square minus 2. Here the first bit is completed. Now we are going to start the second bit. I'll just read out the second bit. It's same procedure, same division method. आप लोग को ये 9th में भी था. It is nothing new for you all. This was there in 9th class. I'm reading the second question. Check in which case the first polynomial is a factor of second polynomial. The first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial with first polynomial.
dividing the second polynomial by first polynomial, and we have to check whether it is a factor or not. If we get the remainder as 0, it is a factor, and if we not get a remainder as 0, it is not a factor. Let's begin the same method. हम जब से जैसा कर रहे थे, it is the same. X t to the power of 2, that is t square minus 3 divided by 2 into t to the power of 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. चलिए let's begin. Again divide the page. थोड़ा bottom में आप line डाल दीजिए to do the rough work. Same thing, we are going to divide the first term of p of x with the first term of g of x to get the first term of quotient, that is q of x. 2 to the power of 4 by t square. यहाँ से t square और ये power cancel होके t square बचा. We got 2t square. हमको आ गया ये term as 2t square. After getting 2t square, we are going to multiply this with t square minus 3. Multiply करो माँ. 2t to the power of 4 minus 2 3s are 6t square. 6t square आने के बाद क्या करना है माँ, जो टर्म है उसके ही नीचे लिखना है हमको. दैट इज 2t to the power of 4 minus 6t square. Change the sign, minus plus, this will get cancelled. Okay, take this term 3t to the power of 3 minus plus, ये साइन चेंज होके प्लस हो गई माँ, माइनस प्लस माइनस, सो 6 minus 2 is 4. अब दोनों में कौन सा नंबर बड़ा है? 6 is the bigger number and the sign of 6 is plus, so plus 4t square minus 9t. Now to get the second term of the quotient, we are going to divide 3t cube by t square. यहाँ से t square और t cube कट गया. आंसर क्या आ गया माँ? 3t आ गया हमको सेकेंड टर्म 3t. 3t आती क्या करना है माँ? हमको मल्टीप्लाई करना है t स्क्वायर माइनस 3 से. मल्टीप्लाई करो माँ. 3t इंटू टी स्क्वायर इज 3t टू द पावर ऑफ 3 माइनस 3 3s are 9t. टर्म्स, जो टर्म्स के नीचे ही डालना है, यहाँ कहीं पर भी नहीं डाल सकते. So 3t to the power of 3 minus 9t. Change the sign, minus plus, this will get cancelled. Copy down this as it is, that is 4t square minus 12. 4t square minus 12. अब फिर क्या करेंगे हम लोग? फिर फर्स्ट टर्म इससे और इससे डिवाइड करिए, दैट इज 4t square divided by t square. t square to square cancel, we got the answer as 4 plus 4. 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे माँ? t square minus 3. 4 को किससे मल्टीप्लाई करें? t square minus 3. 4t square minus 4 3s are 12. 4t square minus 12. So 4t square minus 12. Change the sign, minus plus. Answer is 0. Since we got the remainder as 0, therefore t square minus 3 is a factor of 2t to the power of 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. Since the remainder is 0, you are going to write this. Since the remainder is 0, therefore t square minus 3 is a factor of 2t to the power of 4 plus 3t cube minus 2t square minus 9t minus 12. This is the way you are going to do. Next, begin the second one. Let's begin a second bit. Second question, second bit. That is, we are going to divide the second polynomial with first polynomial, that is x square plus 3x plus 1. और आपका सेकेंड पॉलिनोमियल क्या है माँ? 3x to the power of 4 plus 5x cube
माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, चलिए सेम मेथड क्या करने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म ऑफ p ऑफ x वी आर गोइंग टू डिवाइड विथ फर्स्ट टर्म ऑफ g ऑफ x। स्क्वायर और x टू द पावर ऑफ 4 कैंसिल होके x स्क्वायर बचा, दैट इज 3x स्क्वायर। वी गॉट द फर्स्ट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट दैट 3x स्क्वायर। अब ये 3x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, ये वाले टर्म दैट इज x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 3 3 ज़ा 9x टू द पावर ऑफ 3 प्लस 3x स्क्वायर इंटू 1 इज 3x स्क्वायर। चलिए जो टर्म्स है उसके नीचे पूरा डालते जाइए वहाँ। आप लोग पेज डिवाइड करके यू आर गोइंग टू डू दिस रफ वर्क, यू आर गोइंग टू शो द रफ वर्क, दिस इज इम्पॉर्टेंट। 3x टू द पावर ऑफ 4 प्लस 9x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर, चेंज द साइन, माइनस माइनस माइनस, दिस विल गेट कैंसल। 9 minus 5 plus minus is minus, plus minus minus, so 9 minus 5 is 4, 4x to the power of 3. 9 is the bigger number and the sign of 9 is minus. Minus minus plus with minus sign 7. 10x square, take this plus 2x as it is. चलिए अब क्या कर रहे हैं हम, फिर से इसके फर्स्ट टर्म और इसका फर्स्ट टर्म से डिवाइड करके सेकेंड टर्म ऑफ कोएफिशिएंट लेकर आएंगे। माइनस 4x क्यूब डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। आंसर क्या बचा हमारा, माइनस 4x, माइनस 4x। माइनस 4x को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। दिस वर्किंग शुड बी देर, दिस वर्किंग शुड बी देर इन योर क्लास वर्क. So that is minus 4x to the power of 3 minus plus minus plus minus 4 3s are 12x square minus plus minus 4x. चलिए जो टर्म्स है उस टर्म्स के नीचे डालते जाइए हम. Minus 4x to the power of 3 minus 12x square minus 4x. Change the signs, plus plus plus, this will get cancelled. Plus minus minus, that is 12 minus 10 is 2x square and the bigger number is 12, so we are going to keep the sign as plus. Plus plus plus, or 4 plus 2 is 6x and take this 2 as it is. चलिए अब नेक्स्ट टर्म लेकर आएंगे हम लोग. नेक्स्ट टर्म दैट इज 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. 2x स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर. बहुत सारे प्रॉब्लम्स करें अब तक, आप लोग थरो हो जाना. आंसर इज 2. वी गॉट दिस एज 2. हमको लास्ट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट आ गया 2. चलिए अब 2 को मल्टीप्लाई किससे करना है हमारा, 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 मल्टीप्लाई 2 इंटू एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, 3 2 ज़ा 6x, 2 1 ज़ा 2. चलिए आगे हमको पूरे 2x स्क्वायर plus 6x plus 2. Sorry. Now change the signs. Minus minus minus. This will get cancelled, cancel, cancel. Since we got remainder as 0, since the remainder is 0, since remainder is 0, that implies therefore x square plus 3x plus 1 is a factor of 3x to the power of 4 plus 5x cube minus 7x square plus 2x plus 2. Okay, one more problem is there in the second bit. Same thing. One more problem is there in the second bit. You try to do it as an homework. Okay. Third problem, do it as an homework. Show that the second polynomial, and when you divide second polynomial with the first polynomial and check whether it's a factor, the first polynomial is a factor or not. Do it as an homework. This is all for today's class.
Thank you.